गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, प्रणाम और जय हिंद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एज इट कंटिन्यूज टू बी ऑन अ स्लिपरी विकेट। हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में विद जनरल दुष्यंत सिंह। लेट मी वेलकम हिम। गुड इवनिंग Thank जनरल you, sir. दुष्यंत, वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। Thank you, sir. Thanks a lot for calling me again on your platform, sir. एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव जनरल गुलशन बैक ऑन गनर शॉट। ये इतने दिन के बाद हम मिल रहे हैं। वैसे तो हम रोज बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पर पाकिस्तान के बारे में बात करना थोड़ा एक अलग स्वाद होता है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड फंडामेंटली आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कहीं केयर टेकर गवर्नमेंट आना है, जब केयर टेकर गवर्नमेंट हो रहा है उसका कुछ देयर इश्यूज गोइंग ऑन देयर। देन correct. देयर इज इशू ऑफ टेररिज्म, और जोब में अटैक हो गया। आज सुना है कि एक सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने एक एलईटी वाले को ठोक दिया। कुछ अजीब किस्म के हो रहे हैं कुछ, इनको थोड़ा पैसा मिल गया आईएमएफ से, उसके Correct. तहत भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड आफ्टर हम्म, दैट ये आंख भी दिखाने लगे हैं इधर उधर। सो देयर बिल्कुल। आर लॉट ऑफ इश्यूज पाकिस्तान के बारे में। एंड हर दिशा में दौड़ रहा है। सो हमने सोचा कि आज ये इन चीजों को, so we can discuss it and see what is happening in Pakistan. It's on a slippery Yes. wicket, all right, but what's happening inside? That's why हमने जन दुष्यंत से पूछा। So दुष्यंत, please take it on, all yours. थैंक यू, सर। पाकिस्तान हमेशा एक एनिग्मा की तरह है। ये हमको कभी अपने बारे में समझने भी नहीं देता ठीक से। ये एक पहेली है जो जो कि हम सुलझाते सुलझाते खुद उलझ जाते हैं। दैट इज माय स्टार्ट पॉइंट एज फार एज दिस डिस्कशन इज कंसर्न। जैसा कि हम लोगों ने कई बार पास्ट में भी डिस्कशन किया है पाकिस्तान के ऊपर, इट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स आर नाउ घर घर की बात हो गई है। हर हर एक आदमी जो एटलीस्ट इंडिया में है and who is interested in security matters knows exactly what all problems which Pakistan is having. But it undergoes every day some twists or the other. मैंने एक बार बहुत पहले बताया था आपको कि इस समय इमरान खान एक्टिव हैं। इस समय इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। आर्मी के अंदर देयर इज सम इंटरनल स्ट्रगल गोइंग ऑन। इनको थोड़ा सबसाइड होने दीजिए और आप देखेंगे उसके बाद टीटीपी शुरू हो जाएगी, बलोच लिबरेशन आर्मी शुरू हो जाएगी और एग्जैक्टली वही हो रहा है। मेरे ख्याल से उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मुनीर को। और उसका जो पुराना मॉडल बनाया था कयानी ने, हाइब्रिड रूल का, जब मुशर्रफ के जाने के बाद हाइब्रिड रूल, दैट मीन्स सिविल गवर्नमेंट एक फ्रंट है, रूल बाय दी पाकिस्तान आर्मी। मैं इसको रूल बाय प्रॉक्सी का वो देता हूँ, किताब देता हूँ, क्योंकि ये अपने अंदर ही प्रॉक्सी चला रहे हैं। लोग तो बाहर प्रॉक्सी वॉर करते हैं, ये अंदर ही प्रॉक्सी वॉर करते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो मैं इस डिस्कशन के लिए कुछ You एक know, इससे पहले कि आप बात शुरू करो, तो हाँ आपने बोला था हाइब्रिड के बारे में। हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ अ हाइब्रिड। हाँ जी, I last week I was speaking to Tahir Gora and he came out with an ओके, interesting analysis। और उसका इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि भाई हाइब्रिड भी एक सिस्टम होता है। जैसे एक हाइब्रिड गाड़ी है, इट इज फ्यूल एफिशिएंट, इट हैज गॉट अ बिल्कुल सिस्टम, मैंने इट नीड्स लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? बिल्कुल एंड ही फील्स इट्स इन अ कंफ्यूज स्टेट पाकिस्तान। क्या वो करेक्ट। छोड़ देते हैं, कंफ्यूज स्टेट छोड़ देते हैं। तो दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एब्सोल्युटली chaos। I feel it's in a chaotic state, and that's why I said slippery wicket, कि किस दिशा से जा रहा है हमें उन्हीं को पता नहीं, हमें भी पता नहीं चल रहा और अगर आप देखेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम, ताहिर गोरा ने बड़ा अच्छी बात बोली थी कि हाइब्रिड सिस्टम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। है। अगर आप एफिशिएंसी। अगर आप शुरू में देखेंगे, जब ये मुशर्रफ के जाने के बाद ये मॉडल आया था, काफ़ी एफ़िशिएंट हो गया था पाकिस्तान, काफ़ी एफ़िशिएंट हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने सिविल जो गवर्नमेंट है उसको छूट देनी शुरू कर दी कुछ ज़्यादा, तो अति हो गई। वी कॉल इट इन हिंदी कि किसी की अति भी अच्छी नहीं होती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। अगर इट इज ज़्यादा नॉट घी बैड।
या ज्यादा घी भी खाओगे तो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू, राइट? So I think something like that has happened. Imran Khan went too big for his boots as far as Pakistan army is concerned, और वहीं से उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा झटका लगा। झटका तो लग ही रहा था, इकोनॉमी से, फ्लड से, वो सारी बातें पुरानी हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा अपनी Yeah, स्लाइड्स के साथ। we'll go ahead. तो जो ये देख रहे हैं स्लाइड, ये ना एक तरह से पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन को दर्शाती है। ये एक्चुअली ये जो फोटोग्राफ है ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटा। पहले क्या था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता था एंड दीज गाइज वर एक्चुअली स्ट्रक टुगेदर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पाक आर्मी। इसीलिए मैं बोलता हूँ नो पाक आर्मी नो पाकिस्तान। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होते जा रहा है और इट इज गोइंग आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ पाक आर्मी बिकॉज केपीके और जो बलूचिस्तान है दोनों ही तकरीबन आउट ऑफ इट्स कंट्रोल हैं। और जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का सवाल है, पहली बात तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग नहीं है, पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान मिला के एक्चुअली पीओके है। आज जिसको कि इन्होंने डेलिबरेटली स्प्लिट कर दिया था, वो अलग कहानी है। सो ये हिस्से भी धीरे धीरे अब गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लग गए हैं। तो वहां भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है of a change in both Gilgit Baltistan, POK and to some extent सिंधु देश भी। आप जैसा कि हमने कुछ देर पहले इनफॉर्मल डिस्कशन में बात कर रहे थे, वहां भी एक शुरू हो गई है, दोबारा रिवाइव हो रहा है। नहीं, कब तक रिवाइव होगा, कब तक वो उस लेवल पे आएगा, दैट्स अ मैटर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा धक्का जो पाकिस्तान को इस समय लग रहा है कि जो अफगानिस्तान से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी टू कंटेन टीटीपी and not to support the Baloch freedom fighters, वो नहीं हो पा रहा है। Afghan government, whether by design or whether by inability, I don't think they are unable to do. I think it is more by design. वो एक स्ट्रेटजी के तहत इनको कंटेन नहीं करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू हैव अ लिवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान से कई सारी आवाजें उठी हैं इसके अगेंस्ट। वी विल डिस्कस दैट एज वी गो फर्दर। तो लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कई चीजें ऐसी हुई जिससे ऐसा पाकिस्तान को महसूस हो रहा है। आई मीन दे आर फीलिंग दैट दे आर आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर निकल गए हैं। जो उनकी तकलीफें थी वो दूर हो गई हैं। जैसे कि उनको एक $9 बिलियन का जो IMF और बाकी जो OIC वगैरह कंट्रीज हैं, चाइना ने कुछ लोन रोल ओवर कर दिया है। उसके अलावा IMF ने कुछ अश्योरिटी दी है 3 बिलियन और के लिए। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए 9 बिलियन के करीब उनको अश्योरेंस हो गई है फाइनेंसेस की। बट क्या ये इनफ है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर यूएस ने अभी कल एक स्टेटमेंट दी है उसके स्पोक्स पर्सन ने, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है यूएस दोबारा इसमें आ रहा है। एफपैक रीजन में यूएस अब दोबारा इट इज कमिंग एंड विद अ लॉट ऑफ आई मीन फोकस बिकॉज ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है, इसलिए यूएस ने भी आज बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दी है। कल यूएस ने अश्योर किया है कि वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान थ्रू ऑल इट्स प्रॉब्लम्स। मे बी दिस इज इन रेस्पॉन्स टू द चाइनीज प्रीमियर की जो विजिट हुई है, जिसको कि पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान का खिताब दिया है। इट इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन टू एनीवन। एंड मुझे लग रहा है पाकिस्तान अपना पुराना गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक को दूसरे से भिड़ाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। उसी तरह देखेंगे कि पीटीआई और इमरान को भी काफी हद तक मुनीर और उनकी जो सो कॉल्ड प्रॉक्सी गवर्नमेंट है शहबाज की, कंट्रोल करके रखा है। और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, इट इज प्लेइंग अराउंड नाउ विद द पाक आर्मी और करंट गवर्नमेंट। नवाज को भी ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना इनका हाइब्रिड मॉडल है, तो हाइब्रिड का पुराना, अब वो पुराना अपने Yeah, बैग they're से going back to the old model. या पुराने रैबिट को बाहर निकाल रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये ज्यादा रिलायबल होगा और लपड़ मारेंगे तो ये वापस भाग जाएगा, अनलाइक इमरान खान हु रिफ्यूज टू गो आउट ऑफ द कंट्री। सो वो भी एक इनके मन में ये है, पॉजिटिविटी है कि वी बी एबल टू ओवर दीज आवर करंट प्रॉब्लम। चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है।
स्पेशली गिलगिट बाल्टिस्तान में उनके जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं वो बड़ी एक्टिवली कर रहा है, क्योंकि उससे डबल फायदा चाइना को होता है कि चाइना बिजली भी अपने पास ले जाती है इसकी, और पाकिस्तान को वो बोलते हैं ना टुकड़े दे देती है वो कुछ, it gives crumbs to feed Pakistan, and Pakistan is happy. In any case, beggars can't be choosers. I mean, let's Yeah, put it. they don't have a choice there. Yeah, they don't have any choice because they have to play along with China. अब यूएस को भी देखे, यूएस ने एक स्टेटमेंट दी है कि तालिबान को उन्होंने बोला है कि प्लीज डोंट यूज योर टेरिटरी फॉर टेररिज्म अटैक्स, terrorist attacks onto other countries including in the region. They have not mentioned Pakistan, although डॉन में उन्होंने हेडलाइंस दी है कि पाकिस्तान के अंदर मत यूज करो, but when you go through the proper statement of the spokesperson, he says in the region. Region Yeah, includes India. Region includes India. Region includes Pakistan. Region lot of includes, things. yeah. So they have kept it vague. So they are, पुरानी कहावत जो हम बोलते रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन में रखा हुआ है उसको. रशिया seems to be coming to the aid of Pakistan for energy needs. उन्होंने एक दो भेजे हैं, कुछ शिपमेंट्स भी भेज दिए हैं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं they are trying to get this feeling that they are coming out of the woods. Elections की एक अच्छी खबर ये है कि एक कंसेंसस बन रहा है पाकिस्तान में कि दे विल हैव इलेक्शन समवेयर अराउंड नवंबर, एंड दे वांट टू गेट अ केयर टेकर गवर्नमेंट इन द मिडिल. अब देखिए, दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द हाइब्रिड के जो चलाने वाले जो करता धरता है ना, वो एक बड़ा स्मार्ट मूव कर रहे हैं. केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, वर्ल्ड विल सी, अच्छे नागरिक हैं, पाकिस्तान दुनिया का अच्छा नागरिक है. It's a very क्या बोलते हैं, responsible state of the world. So therefore they get a neutral caretaker prime minister, who of course will be projected as that he is not favored any of the country, any of the political parties. So Pak army has done its क्या बोलते हैं job very fairly. Ultimately the aim would be to get the guy Nawaz Sharif, which we have already discussed. Okay. बट इसमें एक और चीज है जो उभर के आ रहा है कि this government is also used to not hold the elections. हो सकता है कि हाइब्रिड गवर्नमेंट डाल दें. वो मैं आगे आ रहा हूँ. ओके, ठीक है. ओके. अभी तो मैं उनके पॉजिटिव, अभी तो ठीक मैं है. उनके पॉजिटिव्स बता रहा हूँ कि ये सोच रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उनके कुछ हाथी के दांत दिखाने के भी होते हैं और कुछ एक्चुअल और करने वाले गाने होते के लिए हैं. कुछ और होते हैं. या तो ये दिखाने वाले दांत दिखा रहा हूँ मैं आपको. देन ओके. रशिया सीम्स, देन उसके बाद Pakistan, in my view, finally is returning to its old model in a much more stabilized manner. ऐसा, this is how one feels. But is that the complete truth? And that is where I was going to tell you कि या actual कहानी क्या है. अब आप you just take KPK. We showed the map in the beginning. KPK is everybody knows. ऊपर का पहले they've all merged, फाटा वजीरिस्तान वगैरह को merge करके इन्होंने KPK बनाया हुआ है. इसमें क्या है, टेरर्स अटैक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. अभी रिसेंटली बजौर में एक टेरर अटैक हुआ है कल परसों. दैट इज हॉरिबल. 46 पीपल, एंड इट वाज अ पॉलिटिकल रैली. एंड पॉलिटिकल रैली किसकी थी? फजलुर रहमान की. वो फजलुर रहमान की किस्मत है कि वो उस दिन वहां गया नहीं एड्रेस करने के लिए, तो उसका जो नहीं तो वो चला जाता. नहीं तो अभी तो दूसरा गया है, मौलाना उसका जैबुल्ला जान गया और उसका लड़का, दोनों खत्म हो गए. But 46 and over 200 injured. It's a massive attack, and this is not the only one. If you look at it, BLA बलूचिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने लास्ट ईयर से शुरू किया, कीच में, पंजगौर में, नौशकी में, और अभी जुहाब में, और उसके पहले जुहाब से करीबन 2-3 घंटा पहले रात में उन्होंने सुई में भी मारा 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को. Yeah, this has become quite a hotbed. Complete Western belt has become a hotbed. What is of interest, sir, you're right, is that they have started targeting two people. One, the military itself. That's a big statement. Second, they are not targeting normal civilians. They are targeting the political people who are not in favor of their stance. So बड़ा clear message दे रहे हैं वो. ये जो not only that, those chaps who have influence in that area. Absolutely. So they are trying to say that, look, this area is under our control. Don't mess around with this. Don't mess around with KPK.
या सो उसके बाद आप सुसाइड अटैक्स का देखिए, पिछले साल 2022 में ही हमने बोला कि इतना सारा कुछ हुआ, देयर वर 15 अटैक। दिस ईयर वी जस्ट क्रॉस जुलाई, 18 अटैक्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, और ये 19th कल हुआ, वो इसकी गिनती नहीं हुई है। So this is the ninth. So what I'm saying is that the intensity of suicide attacks increasing is a clear sign. It's a clear sign of next Afghanistan being KPK and Balochistan. And this is something which we should be watching out for. And the person who's going to actually be supporting all this is, in my view, Haqqani is losing his grip in Afghanistan. It will be the faction, though not the Doha faction, but Kandahar faction under Habibatullah Akhundzada, which will be Akhundzada. actually Akhundzada, which will be active here. And what about the Afghans, which I have already mentioned? Afghan Taliban seems to be not in control. In fact, if you remember, 2-3 days back, I told in a program, a lady had given out a statement, "तुम कौन होते हो हमको बताने वाले कि हमको क्या करना है?" That was the statement of the spokesman of Afghan Taliban, Mr. Mujahid. और मिस्टर तो बोलेंगे नहीं उनको, मौलाना ही होगा Yeah. कोई, मुजाहिद उसका नाम था। उसने ये स्टेटमेंट दी, हु इज पाकिस्तान टू गिव अस डायरेक्शन दैट वी विल अटैक और विल नॉट अटैक। हाउ आर द ग्रुप्स सस्टेनिंग? So this is something which I feel Afghan Taliban, if not actively supporting, it is turning the eye away from where their bases are. Bhai, you don't trouble me, I don't trouble you. I have enough of ISK handle as far as Afghanistan is concerned. तुम्हें जो करना है करो, मेरे पीछे मत पड़ो, जो पाकिस्तान में करना तुम करो. In any case, they are Pashtun brothers separated by so-called Durand Line, which is not recognized by Afghanistan. Until date, there is a statement to the fact that Durand Line has not been accepted by any government in Afghanistan, irrespective of its leanings, whether it has been. So that's a statement of fact, right? इसके बाद अब जब ये इस तरह की सिचुएशन टेररिज्म की आई, तो कोर कमांडर्स ने क्या पहले मुनीर ने स्टेटमेंट दी कि भाई वी विल नॉट टॉलरेट अफगान तालिबान you allowing its territory to be used for terror attacks, and followed by the core commanders who said that, how do we solve the Kabul problem? And I start remembering Kashmir in this. उन्हीं की दवा उन्हीं को मिल रही है. More than that. I think it's much more than that, because there's no solution. They can't go and attack Kabul. There's no military solution. Correct. And जो बात करते थे ना हमको कि हमारा मुंबई अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हो गया, give us evidence, give us concrete facts and figures, then only we can take any action. This guy is not there. Exactly the same words are being used by Afghan Taliban to Pakistan, that give us evidence, we will take action. And not only that, they're saying give us money so that we can relocate these camps. Yes, absolutely. ये भी तो पूछ रहे हैं वो. Yeah, but Chinese are smart. They have given them enough mullah cash to relocate the ETIM further down south and not along the Afghanistan-China border. So the Chinese are playing smart. पाकिस्तानी के पास तो पैसे भी नहीं है ना, तो क्या करे वो? ना पैसे दे सकता है, ना उनको मार सकता है. एक बार once. I agree with you. Yeah, so we'll move further. Is Taliban doing the bidding of Pakistan on terrorism and border issues? I have my serious doubts now. So is it the complete truth? I have my doubts. They are still in deep trouble. And what are the other aspects? People of Gilgit-Baltistan and POK are unhappy with Pak government. In fact, GB, there are voices agitating to merge with Ladakh. And this is coming out. This is to be seen. This is to be seen, and how we handle these voices are also important. Correct. As we go along. Yeah, and what about the relations with Afghanistan? I have already discussed. Has PTI been really tamed? Imran still has the popularity and few loyalists backing him. असद कैसर ने अभी कुछ स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, कि भाई आप पीटीआई को बैन नहीं कर सकते हो. और उसके बाद एक और स्टेटमेंट इमरान ने भी दी है कि अगर आप पीटीआई को बैन करोगे, हम दूसरी पार्टी, दूसरे नाम से अपनी पार्टी शुरू कर देगा. तो ये भी एक खतरे से बाहर नहीं हुई. उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन इज स्टिल इन प्रॉब्लम्स, एंड मे बी दैट इज व्हाई Nawaz Sharif is hesitating to come to Pakistan till now.
How long not they only will? that, when the IMF granted the loan, they even Hmm. consulted PTI, if you remember. Absolutely, absolutely. They have discussed it with Imran Khan. So ऐसा नहीं है कि Imran वो, Khan. yeah. So because IMF का तो पैसा है ना, they have to हाँ have हाँ an बस assurance that the money comes yeah, back. yeah, yeah. They Comes are back. not interested. Yeah, they are not interested who's ruling. They are interested if this guy comes into power. I hope we get back some money of ours. So Yep. obviously they will interact with everyone. Then neutral prime minister की बात हो रही थी, acting government की बात हो रही है. Is it really succeeding? Every party which is part of the PDM has given 5 candidates for acting prime minister. So therefore शहबाज शरीफ रियलाइज कि ये तो चाल चल नहीं रही है. उसने बोला अभी सेंसस की प्रॉब्लम हो गई है, डिजिटल सेंसस होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा. एंड यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डू सेंसस इवन इफ इट इज डिजिटल? Yeah, It it'll will take take 2-3 years minimum. minimum. So are you likely to see a government? Very serious doubts, very serious doubts. It may be a national government or an acting government which the Pakistan army may try to control from outside. This model may not succeed. The people will look through it, and I think Pakistan people are now getting more aware as compared to पुराने जमाने थोड़ा खत्म भी हो गए हैं. Then free and fair. So what about Pak Army's hybrid model of governance ruled through a civil proxy government? I think this is what I just told you कि ये जो मॉडल एक्टिंग वाला जो मॉडल है, I don't think this will survive for long, and Pakistan Army Hey, will but get into. well, I also agree with you that it will not survive for long. But it might be in the interest of the Pakistan army to continue with it. Yeah, reason being that more the time passes, Imran Khan will start losing his popularity Losing because his one of popularity, and Asim Munir gets more grip over the power. situation. Yeah, he keeps Power. getting that additional stranglehold on the Pakistan as a nation. Pakistan. Then, yeah, within the PDM, I believe there are voices of dissonance. Bilawal is on his own Yeah, trip. Every that's there eh, completely. so are they out of the truth? I doubt. So finally, this is my summation, and we are having a very Okay. short presentation. No. Need Please go ahead. I'll need enlarge 20, the thing. I'll take all of us out so that people can see this fully. yeah, okay. Yeah. Why Pakistan troubles remain? $9 billion is not enough. They need 20 billion in the next 2 years to pay external loans. Received 3 billion. I mean, rest of the details are how they have received 9 billion. So therefore, they will again go out with a begging bowl after 9 months. Credit rating of Pakistan has been lowered to CA3. This is a rating which means that a country is at default risk even after 9 billion. 750,000 people left Pakistan in 2022, a threefold increase. What is it pointing to? If the elections are not held, I have my serious doubts if people will stay, especially the rich and the mighty. They will all start trooping out of Pakistan, and if they troop out, the economy collapses. Flood losses have still not been made up. Inflation continues. Today's inflation rate is 28%. Even there was a recent Gallup poll done again. 62% blame PDM for the economic woes. So Imran Khan somewhere has got out scot free, despite the fact that he also had an equal hand in the mess which Pakistan has now come into. Political stability is still on a shaky wicket. Imran down but not out. TTP and Afghan Taliban connection. So therefore, KPK is not stable. How far that elections in Balochistan and KPK will be really meaningful, it's a doubtful case. China is bypassing Pakistan while dealing with Afghanistan. This is a major aspect. You see, more the Afghanis get this feeling that they can do without Pakistan. Pakistan's problems are only going to increase and not reduce. Unless Pakistan mounts a military operation, which, to my mind, will turn Pakistan into the next Taiwan, because the boots will be on the ground, and you know what the Afghanis are, especially the Talibanis, are expert in. They are expert in small wars, and these small wars have defeated a lot of people. In fact, Pakistan army gave a statement. Pakistan actually gave a statement that we are ready to help Afghanistan. We understand that they don't have a standing army,
So we will provide them all this security. I mean, this is telling somebody who has fought so many wars with so many superpowers to say कि भाई पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा. ये तो मजाक वाली बात हो गई ना, कि बोलता है भाई मैंने तो अमेरिका को हरा के बैठा हूँ, तू क्या हराएगा मुझे. So this is something. Yeah. So areas under control of Pakistan. Entire KPK, 85% of the area, this is recorded, is now under control of the TTP. Baluchistan, only very limited garrison. They have got restricted to garrison. Imagine when attacks start taking place in an area on garrisons, it clearly implies that the outer areas have been lost. The areas beyond the garrisons have been lost. Otherwise, you can't have 4 attacks in a row, and these attacks are not taking place by small arms. These attacks are taking place with high lethal weapons, including rockets, including all that which was left over by the yeah. US guys. And there is a running market. अफगानिस्तान में एक लाइसेंस बनाया उन्होंने हथियार खरीदने के लिए. अफगानिस्तान गवर्नमेंट gets the money out of it. So now they have formalized this economy to get over that poppy thing which they have. Mounting unrest in GB and POK, I have already discussed. This is going to be a story which will unfold slowly. But as it unfolds, how we should handle it is something which we have to very carefully discuss. It can't be discussed on this platform. I won't like to suggest anything on this particular issue. I'm sure the things will be taken into account how we have to handle this, because it has connotation. By virtue of China now involved in this dispute, it has become a tri-party dispute to my mind. Although people may not agree to it, but it is truly now become, GB has become a tri-party dispute, in which Chinese are also involved and Pakistanis are also involved. So how we are going to handle this is something which we have to need very carefully discuss. Narrative war over POJK and GB. This is, in my view, there is a need for this war to start. Who will do it? How we will do it? But that soft option is the only way where we should currently remain in, and we should not be falling prey to the voices which happen in the country all around. घुस जाएंगे, निकाल देंगे, मार देंगे. I think that is being very, very that would not be a very sensible step as far as we are concerned. And finally, Imran, Taliban, TTP popularity continues. We have to watch out for Faiz Hamid. Faiz Hamid is behind a lot of actions which I think people are not realizing it. He is the man working with Taliban to my Behind the mind. scenes. Yes. He's the man working behind. So, sir, here we have actually finished with our presentations, but have some pictures and photographs to just show to the people why I have दिखाओ. why I have derived all this conclusion, on what grounds I have derived these conclusions. These are not figments of my imagination. ये सब उधर का. You're right. आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है. संक्षिप्त रूप में अगर मैं बताना चाहता हूं तो आपने ये बताया कि स्थिति जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पीओके में it's become a little tripartite and a little this thing with Chinese presence increasing, internal voices coming, our interest there, Pakistan's own interest there. So that's a separate thing which is going on a trajectory of its own. It's getting a trajectory of its own. Yeah. Second thing जो आपने बताया है कि Pakistan is not in control over large parts of Balochistan and KPK. Absolutely. The state is losing control. The third thing जो उबर के आया है, and yesterday, this gentleman Kaisar Bengali, he made a speech and that has gone viral over all WhatsApp groups. और इसने बताया कि Pakistan is selling everything away. Yeah. A lot of वो एक अलग कहानी है. वो नहीं, अलग कहानी. बात यह है कि वो कहानी इसमें जुड़ा हुआ है. मैं क्यों I'll come to that. क्योंकि there's a fire sale on in Pakistan as per many people कि सब बेच रहे हैं वो. ठीक है, तो कुछ दिन में पाकिस्तान का काफी हिस्सा पाकिस्तान का ही नहीं होगा और किसी का होगा. तो अगर आप ये तीन चीज देखेंगे तो पाकिस्तान the government of Pakistan has very little to control.
and it is actually going in three different directions. One is international, one is towards Afghanistan, one is towards China, Gilgit Baltistan. Absolutely. तो इस लिहाज से what is our take in it? How do we handle this situation? क्योंकि जो और अच्छा, इसको अंडरपिन करते हुए एक और आर्टिकल मैंने डॉन में पढ़ा, they still consider India as their main threat. Obviously. Yes, that's the funny part. नहीं, that's the funny part that you cannot stop them from thinking. आप Yes. भले ही बोल लो कि you are not the threat, but वो सोच, उनका सोच तो यही है ना कि भाई as India grows, India is the bigger threat to all of us. And ये this is not an army view. This is a view of a guy who's writing an op-ed. Absolutely. And many of them write like that. उनकी survivability इसी पे है. इसी पे है. So what do we do? What is our thing? Right. So we'll take one by one. Right. Yeah. You spoke of Gilgit Baltistan that we would not like to discuss this on this forum. I also agree with you. But let's talk of something else. Don't you think we should start a narrative war? Don't you think we should do a political outreach? Because जब तक ये political outreach, I told you, sir, that POJK and GB, it is time to start the narrative. It is time to start that. If you see my last slide, in that I've said that how we will do it, what will be the format, that we will not discuss. But no, देखिए बात यह है कि there is also a very legal format on which we can talk. See, in the erstwhile Jammu and Kashmir legislature, you kept 25 seats vacant for them. Yeah, I know that. Okay, and that's good enough a political base to start with. And your political outreach to them कि भैया आपके 25 seats यहाँ vacant हैं, आप election करा लो. It might not be elections within the state, it can be elections outside the state also, by proxy, by poll, by internet, and nominate 25 people to this assembly. उन्हीं के शब्द हैं सर. अयूब खान, in his memoirs he has written that about Gilgit Baltistan and POK, that the Karachi agreement which was signed between Sardar Ibrahim, the GB president, Chaudhry Ghulam Abbas, who was the president of the Muslim conference, which was active in POJK. These people have signed the document. Later on, they've all gone on record to say that we are not even aware of this kind of a thing. How have they removed Gilgit Baltistan from Azad Kashmir? The case was filed with the High Court of Pakistan, which gave a ruling that this cannot be done. Please include Gilgit Baltistan as part of Azad Kashmir. उन्हीं के डॉक्यूमेंट से नैरेटिव शुरू करो. मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह की we need to build a case. We need to build a legal researches शुरू करनी पड़ेंगी. That's what. Yes. So that means while we might not like to discuss many things in the open forum, which I agree with you, but things like public opinion, pre-warfare strategy हमारा शुरू करना चाहिए against Pakistan. You start your legal war, legal, right? You start your public opinion thing and you start your propaganda. आप शुरू कीजिए, किसने मना किया आपको? Absolutely. In fact, there is a author, I'm forgetting his name. He is a very, very fine author. He's a well-known advocate of India. He has written a book in which he says there is no harm going to the International Court of Justice to give your legal claim on Gilgit Baltistan and POJK. And he says, worst come to worst, if the decision is in your favor, bale, another narrative to go ahead with. If it is not in your favor, what is changing? You are still holding on to what you are holding on. So you start that process. Yeah. Right. And if nothing, start the threat at least कि भाई हम जा रहे हैं, और इसको publicize करो और सब कुछ करो इसको. बिल्कुल. देखिए जब तक हम चुप रहेंगे, my way of looking at it is डिफेंस मिनिस्टर बोलना कि हम पीओके को ले लेंगे और किसी आर्मी ऑफिसर का बोलना कि अगर हमें हुक्म मिला तो हम ले लेंगे, ये सब बेवकूफी है. सारा सर बोल रहा हूं मैं, मेरे को डाउट नहीं है. हमें एक नैरेटिव शुरू करना चाहिए, एक प्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी शुरू करना चाहिए, राइट? और एक वी नीड टू स्टार्ट अ कैंपेन टू रीगेन दिस एंटायर एरिया एंड पुट क्लेम. करेक्ट.
And we also have to start a campaign locally, to go against the Chinese, vagara, vagara. We know all that, how to do, and we should, I think it's time we started it. Okay. Correct. So we've discussed GB, right, and POJK. How do you deal with the situation in, KP and Balochistan and the way it is developing? Do we involve ourselves or let Pakistan stew in its own juices and just push them or ignore them so that they, uh, you know, keep looking inward? You see the our aim in this particular region should be that we should not be directly seen as doing anything, which is kind of creating this impression to the world that we are interested in destabilizing Pakistan. My way of looking at it is that please invest in the people of Afghanistan, right? Not in the government. Please invest in the people of Afghanistan. Make Afghanistan competent enough to stand on its own feet without the help of Pakistan. The damage will be done. Yeah, I agree with you. So I mean, you if you have to do reach this, out to the people. yes, Yeah, tell me. and we have enough connection with Afghanistan, people of Yeah, there's no Afghanistan. doubt. Do you know that people who are being trained with us, they've all joined the Afghan Taliban. They are our Yeah, we still ambassadors. have links with them. They are our ambassadors, sir. Yeah, People have वो gone. एनडीए से हमारे साथ थे. देखिए एनडीए से हमारे साथ थे, तो वो बिल्कुल. उनका तो दैट is there. इसमें कोई, so that means we need to have outreach to the people of Afghanistan either Correct. directly or indirectly. और ये भी हो सकता है कि हम इनके साथ तालिबान के थ्रू भी डील करें और तालिबान के उस हिस्से से डील करें जो हमारे साथ हैं, राइट? जैसे ये अब बात कर रहे हैं, तो बात सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो लिंक्स अफगानिस्तान के साथ है वो बहुत गहरे हैं और इन Uh, लिंक्स को और मजबूत करने की जरूरत है, so give राइट? me 30 seconds. ओके. Give me 30 seconds, sir. I'll just come. या गो अहेड, फिनिश एंड कम, राइट? नो, नॉट एन इशू एट ऑल, राइट? तो ये बात ये है कि हमें ये चीज को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है कि हमारा जो लिंक्स है अफगानिस्तान अफगानिस्तान तालिबान पीपल ऑफ अफगानिस्तान के साथ मजबूत करना है. इसके साथ साथ वी नीड टू एक्ट थ्रू ईरान. मैं हर बार यही बोलता रहता हूं कि ईरान के साथ हमारा संबंध बढ़ाने से काफी हद तक वी विल बेनिफिट, राइट? Oh, but my view also, and it is a view of large number of people in like-minded thinking, that leave Pakistan alone, let them stew in their own juices. हमें उनके साथ ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, हमें उनके साथ ज्यादा कष्ट करने की जरूरत है. So let them do what they have to do. So we are now clear as to what we have to do with Afghanistan and what we have to do with Pakistan. Okay, how do you deal with those people who are still anti-India and etc. etc. And how do you deal with this? How do you use the external influence that is through UAE, Dubai, and Saudi and external thing and put pressure on Pakistan? Sir, as far as dealing with people who are anti-India, there has to be a story, which we have to implement, and it can't be a story only of only a organ doing what it has to do. Diplomacy has to kick in, and I think the foreign minister is doing a good job of it. Then we also have to look at the alliances which we have, basically both, especially in the Islamic world. Here I would like to focus that the Islamic world needs to be targeted by us. They have to be pulled out of the orbit of Pakistan, sir. That is another important thing. I think I too, you too, all these alignments which are there, they have to be carried forward much more aggressively. We should not allow any kind of a diplomatic leeway or international relation leeway to Pakistan. It has to continue to remain isolated, and in this, most important target should be US and China, because US, in my view, is now looking to prop up Pakistan.
and that's not a good sign for us. We have Hey, to but we have I, I mean, there could be a different view also on this thing. What you said, this that US is trying. It's also possible that keeping Pakistan under their thumb, helps them reduce the Chinese influence. uh, that is one of the ways to deal in these kind of things. but the Yeah, but the and but बोलते हैं ना another सर, thing, हर बट हर गोली का साइड इफेक्ट होता है सर. no, मैं वो तो मैं है. मैं We have to take care of this and through our. मैं कह रहा हूँ सर, उसने तो अपनी गोली के लिए पैरासिटामोल दे दिया, सॉरी हाँ, ब्रूफेन दे दिया, बट ब्रूफेन का साइड इफेक्ट ये है कि बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है. सो वी शुरू हो हैव टू बी जाएगा. ओके. केयरफुल दैट आवर इंटरेस्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, एंड आई थिंक वी शुड नॉट लेट play too much against each other. I mean, France, US, we have to take these guys along with us quite No, actively. on that there's no doubt. After all, we need to also leverage our strategic partnership with USA because Correct. USA still has some grip on Taliban, just जो मैं Yeah. देख रहा हूँ. Correct. A lot of things Taliban is behaving the way USA wants, Absolutely. and that grip we need to have. They just met in Doha, sir. They had a meeting Yeah. in Doha. So So that in is why fact, I'm saying the Arab world has to be well with us, sir. And for that, I think yeah, we have to do a little, lot more, lot more. I won't say little more. We have to do a lot more. no, we have to do a lot of balancing. And as far as the US is concerned, sir, we have to be careful of the US also. This is my view. Yeah, Today there's no itself, doubt नहीं है. they have invited Wang Yi, the Chinese foreign minister, to visit their Well, country. yeah. See, देखिए, बात यह है कि in this atmosphere, anything can happen, and we have to be clear that we have to deal our hand the way we have to deal it for ourselves. ये जो आप And बोल रहे हो बहुत important है. You can have a relationship with anyone, but ultimately you have to look after your interests. sir, today's world, I am more and more getting convinced. Earlier, I used to believe in a little bit of ideology, a little bit of high moral ground, and going with an alliance, etc. But now I am realizing everything is transactional, sir. Everything is transactional. Everything is at that point in time. At that point in Yeah. time, what is right for you, you go ahead with that, sir. And I think that is the only way we have. The other thing which I wanted to tell about anti-India noises was that, sir, we need to get our structures in place for information wars, information operations. I won't say war, information operations, sir. As of now, sorry to say, every We political don't party have. in our every political party in our country has a solid information wing. Solid means, sir, before the other guy utters a word, there is a counter story going on the other side, sir. That's the Why kind don't of. they do it externally? Absolutely, that's what I'm trying to tell, sir. If you look at the IT wings and the information wings of these political parties, they are the most sophisticated guys. They've started using AI. They've started using everything in the world. Everything. But they do use it against each other, not against our So, enemies. so what stops us now from actually creating a coherent, and I'm saying coherent information operations strategy, information operations structures, which should include the cyber also part of it, and not have a cyber advisor individually esconded in some corner giving his advice once in a while. We have to have a cogent policy under an deputy NSA who should be able to coordinate this thing or have a separate ministry. In my book, I have written have a separate ministry. Yeah, that's This is fine. now That's this is now the war of the future, sir. Yeah, and if you are not awake to it, if you are not aware of it, if you are not doing enough for this, I think we will bite the dust. Second World War, First World War, यही हुआ है. yeah. हमने पहला I पहला think फेज पुराने तरह से लड़ा. right. I think you made today आज का जो बातचीत का डिस्कशन का मेजर इशू जो उभर के आया है that we need to have a very clear-cut strategy of information operations. We need to have Absolutely. a very clear-cut strategy of lawfare. We need to have very clear-cut strategy of influencing public opinion, Absolutely. right? And
जो आपने इम्पोर्टेंट बात बताया, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस लूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताया कि ये जो इतना हमारा राजनीतिक पार्टी है, एक दूसरे के गला काटते रहते हैं, एआई इस्तेमाल करते हैं, साइबर थेफ्ट इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों ना ये पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये आपका ही नहीं, मैंने ये इसके बारे में लिखा भी है, बिल्कुल, लिखा बिल्कुल है सही सही मेरे बात है। आर्टिकल्स में। और ये बिल्कुल, सरासर बेवकूफी है अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो। मेरे ख्याल में ये है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सबक जो हम कल बताएंगे, राइट? तो I will take a few questions and we'll finish या it off when we cut off an hour because I